So फास्टली एक बार हम लोग आज लॉजिक गेट्स को रिवाइज कर लेते हैं बेटा, विच एवर इज बीन रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन। और डैम शो क्वेश्चन आता है सेमीकंडक्टर टास्क में, 2 से 3 क्वेश्चन भी आने के चांसेस है। सो मिनिमम तो 2 आएंगे किसी हाल में भी, तो एक 1 पार्ट विल बी एक्सपेक्टिंग द लॉजिक गेट क्वेश्चंस। तो फास्टली हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई होप रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बेटा। चलो, लॉजिक गेट्स। ओके, तो देखो इसके अंदर हम लोग को पहली चीज जो याद रखना है एग्जामिनेशन हॉल के लिए, देखो बस इतना ही है। फर्स्ट थिंग इज voltages. 1 is represented for your high voltage and 0 is represented for your low voltage, है कि नहीं? For your high voltage, we represent it by 1, and for low voltage we represent it by your 0. We represent it by your 0. Clear है? Is that clear? For high voltage we represent it by 1. 1 आ रहा है मतलब that will be your high voltage, and low voltage मतलब it will be your 0. So next one, what we will be doing in this one is nothing but of your Boolean algebra. ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा ये will be giving you a bar and b का होता है b नॉट। ओके, अगर ये हाई वोल्टेज है तो a नॉट विल बिकम फॉर मी 0, b नॉट विल बिकम फॉर मी 0, इजंट इट? यानी अगर ये डबल बार है तो जब क्या हो जाएगा बेटा, ये डबल बार दैट विल बी इक्वल टू योर a, एंड b डबल बार जब होगा इस पे, सो दैट विल बी इक्वल टू b। ठीक है, ये अगर 1 है तो a के ऊपर अगर हम लोग एक नॉट लिख दें, एक बार डाल दें, तो दैट विल बिकम फॉर मी 1 का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर 0 है तो दैट विल बिकम फॉर मी 1। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलो, इसके अंदर और एक पॉइंट याद रखना है हम लोग को, दैट इज a बार डॉट a बार विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इसी तरह से b डॉट b बार विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू 0। क्लियर है? a dot a bar will be equal to 0, b dot b bar will also will be equal to your 0 particulation, isn't it? In the same way, और एक point भी याद रखना है ऐसे के अंदर, basically a bar dot a bar is always equals to your a, and b dot b will always be equal to your b. A dot a is 1 and b dot b is equals to how much for me, or b. A dot a is nothing but a, and b dot b is always equals to your b particulation. Clear for everyone? Okay, sure. Next one. Break the bar and change the sign. Okay, देख लीजिए, sometimes you'll be getting equation something like this. कंफ्यूज होने की बात नहीं है. So if it is a plus b bar total bracket, and this one is your dot a b bar plus this one is your a b, and there is a total bar on this one like this. There is a total bar on this one like this. Okay, so whenever you are removing the bar, make sure that the dot will change it to your plus, and the plus will change it to your dot. ये बात अपने दिमाग में याद रखो. Dot will be changing to your plus, and plus will be changing to dot when you are breaking the bar. देखो अब ये कैसे लिखेंगे? If I am breaking the bar right now above, isn't it? Only I'm removing that one. So this can be written as of your a plus b bar. This is total bar. Okay, and this dot will become right now here plus, and this one is your a b bar plus this one is a b, and this one is bar. समझ में आई बात सभी को? Now again when I am breaking this bar, so this can be written as of your a bar
plus will become for me dot and this will become for me b double bar plus ये तो ऐसे ही रहेगा. So this will become for me a double bar ये हो जाएगा a b double bar and this plus will become for me dot and this will become for me a b bar. आ गया यहाँ तक सभी को, isn't it? And you know that I can write this one as something like this. This one is your a bar dot b double bar means it will be b only plus this one is your a b double bar means this will be equal to your a b and this one is nothing but of your dot, this is nothing but of your a b bar. Clear है? Is that clear? Is that clear? यहाँ पर देखो a dot a bar is how much beta? 0. Is that clear? B dot B bar will also be equal to your 0. Clear है? तो ये कितना बन जाएगा? Can anyone tell me? This will become how much for me beta? So the answer I will be getting right now here is equal to your A bar dot your B. ये पूरा तो 0 हो जाएगा ना बेटा? Is it clear for everyone? Because when I'm multiplying with A with your A bar, it will be 0. When I'm multiplying your B with your B bar, that will also will become 0. So remaining will be A dot A bar dot B. Clear है? Is that clear? Is that clear? Is that clear? चलो और एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2. ए आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए. लाइक से फॉर एग्जाम्पल इट इज ए बी बार प्लस दिस वन इज ए बार ए प्लस ऑफ योर बी एंड देयर इज ए टोटल बार ऑन दिस वन लाइक दिस. ओके चलो इसमें कैसे लिखते हैं बताओ जल्दी स्टेप में. मुझे ऊपर का बार निकालना है तो आई कैन राइट दिस वन एज ऑफ योर व्हाट बेटा, दिस कैन बी रिटन एज ऑफ योर ए बार बी डबल बार आ जाएगा. प्लस निकल के क्या हो जाएगा डॉट, ये बन जाएगा ए डबल बार एंड दिस विल बिकम फॉर मी ए प्लस बी बार. आ गया सभी को? आ गया सभी को? चलो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट हियर राइट नाउ बेटा. नेक्स्ट स्टेप विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? कैन एनीवन टेल मी? अगर इसके ऊपर पूरा बार है यहाँ पर, isn't it? तो सॉरी यहाँ पर मैंने एक स्टेप गलती कर दिया. सो ये इसको मैं खाली बार ब्रेक कर रहा हूँ ना, तो आई राइट लाइक दिस ओनली फर्स्ट. सॉरी, तो इसको मैंने यहाँ पर पहले बार ब्रेक करा तो उसके बाद यहाँ पर ये बार. अब उसके बाद ये कितना बन जाएगा कोई बताएगा बेटा? सो दिस विल बिकम फॉर मी हाउ मच? कैन एनीवन टेल मी? ये कितना बनेगा? दिस विल बिकम फॉर मी ए बार, isn't it? And this will become for me B double bar, isn't it? This will be equal to your dot and this will be your A bar and this will become for me your A bar already है यहाँ पर, so this will become for me A double bar and this one will be equal to your how much बेटा? A plus B bar. ठीक है? Now see, A double bar is how much बेटा? Can anyone tell me? See, A double bar is ये, B double bar will be equal to your B. ये logic gate अपने को याद रखना है, basic condition. तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, देखो कोई बता सकता है? This will be written as of your. Can anyone tell me? This can be written as of your. This can be written as of your. बताओ जल्दी से. This will be written as of your A bar. This will be equal to your B. This one is nothing but dot and this one is nothing but of your A double bar हो गया ये. Clear है? Is that clear? यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, मतलब this is your dot बेटा. This is also your dot. तो यहाँ पर मैंने dot लिखना भूल दिया, यहाँ पर भी dot है. तो ये बार जब निकाल रहे हो बेसिकली तो यहाँ पर बन जाएगा A बार, ये बन जाएगा प्लस. यहाँ पर डॉट है ना बेटा, ये बार जब निकाल रहे हो तो दिस विल बिकम फॉर मी प्लस. यहाँ पर भी डॉट है, जब उसके ऊपर भी बार निकाल रहे हो तो दिस विल आल्सो विल बिकम फॉर मी प्लस, दिस विल आल्सो विल बिकम प्लस. ये तो डॉट ऐसे ही रहेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू योर ये प्लस विल बिकम फॉर मी प्लस एज इट इज एंड दिस वन विल बिकम फॉर मी A बार, दिस वन विल प्लस विल बिकम फॉर मी डॉट इनटू योर B बार. आ गया सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है बेटा, उसको थोड़ा सा याद रख लो, काफी है बेसिकली. अब उसके बाद चलते हैं हम लोग लॉजिक गेट्स पे. लॉजिक गेट्स में फर्स्ट गेट जो होता है बेसिकली याद है किसी को? फर्स्ट गेट इज नोन एज ऑफ योर नॉट गेट. फर्स्ट गेट जो होता है बेसिकली इट इज योर नॉट गेट. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलो फर्स्ट वन देखिए नॉट गेट. नॉट गेट देखो, अगर मैं नॉट गेट का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं,
Not gate is something like a triangular shape like this and with a small hole in front of this one. Okay, and ये हो गया यहाँ पर एक line और यहाँ पर हो गया एक line. This one is your input. This is nothing but फिर ये and this is your output. Output will be equal to your A bar. अगर input 1 है तो output हो जाएगा 0. अगर input 0 है तो output बन जाएगा मेरे पास 1. Is it clear for everyone? इसका ट्रूथ टेबल देखो कैसे लिखते हैं बेसिकली. इफ आई एम टेकिंग द ट्रूथ टेबल ऑफ दिस वन, दिस विल बी द ट्रूथ टेबल फॉर दिस वन. इसमें देखो बेटा, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर ए बार. ओके, अगर इसके पास इनपुट 1 है तो ये बन जाएगा 0. अगर ये 0 है तो ये बन जाएगा 1. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? नॉट गेट के लिए. Sure. Next one is nothing but if your AND gate. So ये हो गया ऐसा कुछ D shape structure like this. Okay, so we'll be getting 2 inputs in this one and 1 output like this. So one input is given A, another input is given as of your B. This output will be equal to Y. So this one is known as what gate? It AND gate. जो D shape में आता है, that is your AND gate. AND gate is always equals to Y is equals to your A dot B. AND gate को कैसे लिखते हैं बेटा? Y is equals to A dot B part of relation. तो इसमें देखो ट्रूथ टेबल लिख रहा हूँ मैं. This one is A, this one is B, this one is your Y. Y is equals to your A dot B. ओके, अब इसके अंदर अगर ये वैल्यू मेरे पास 0 है और b वैल्यू 0 है तो y विल बी इक्वल टू एंड है ना बेटा. सो दिस विल आल्सो विल बिकम फॉर मी 0. इफ a वैल्यू इज 0, b वैल्यू इज 1, देन y इज नथिंग बट ऑफ योर a एंड b. दैट मींस दिस विल आल्सो विल बिकम फॉर मी 0. इफ a वैल्यू इज राइट नाउ फॉर मी 1 and b value is like 0, this will be equal to 0. If this is 1 and this is 1, so this will also will be equal to your 1. Is the truth table clear for everyone? Sure. Third one is right now for me OR gate. Okay, OR gates will be something like an arrow mark. Okay, इसका एक output होगा. And there are 2 inputs for this one. This is your input A and this is your input of your B and this is your Y. So Y is equals to your A plus B. Y is equals to your A plus B part of relation. अगर मेरे पास ये है, this is B and this is your Y. Y is equals to your A plus of your B. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ basically like this and this is one table, this is one table and this is one table. अब इसका टेबल देखो बेसिकली बेटा आर गेट का. इफ y is 0, b is 0, y will be equal to how much बेटा? r ना. So this will also be equal to how much? 0. If this is 0, this is 1, this is 1, this is 0, this is 1 and this is 1. 0 and 1, y will be equal to how much बेटा? or गेट है ना. So this will become for me 1. 1 and 0, this will be equal to 1. 1 and 1, this will be equal to 1. Is it clear for everyone? Is the 3 gates clear for everyone? Logic gates, non gate, NOT gate, AND gate and as well as of your OR gate. चलो नेक्स्ट वन चलते हैं हम लोग NAND gate. जितना जरूरी है बेटा, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, अभी टाइम भी नहीं है, इसीलिए मैं जितना आप लोग को रिक्वायरमेंट होता है रिवीजन के लिए उतना ही करा रहा हूँ बेसिकली. दिस विल बी योर डी शेप स्ट्रक्चर बेटा, समवॉट लाइक दिस with your NOT, ठीक है. So there will be 2 inputs in this one. So this is one input A, this is your another input B, and output will be equal to your Y. This one will be your Y. So Y will be equal to your A dot B NOT. ये जो 0 सिंबल दिख रहा है ना, इसको हम लोग NOT बोलते हैं बेसिकली. Is it clear for everyone?
यानी इसका एक्चुअल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्चुअल अगर मैं ड्रॉ करूं, सो दिस विल बी योर एंड गेट लाइक दिस, एंड देयर विल बी अ नॉट गेट लाइक दिस, ठीक है, एंड देयर इज एन इनपुट ए एंड देयर इज एन इनपुट बी एंड दिस इज योर आउटपुट। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू योर a डॉट b, तो यहाँ पर आ जाएगा y डबल डैश विल बी इक्वल टू योर a डॉट b का नॉट। क्लियर है, इज इट क्लियर? It is a combination of your AND gate and as well as of your NOT gate. अब इसका ट्रूथ टेबल देखो बेटा, जल्दी से बताओ ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा। सो दिस वन इज से फॉर एग्जांपल ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज योर फिर वाई, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी नॉट, ठीक है। देखो इफ ए इज 0 बी इज 0 देन वाई विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, ए डॉट बी मतलब क्या हो जाएगा 0, 0 का नॉट कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, 0 एंड 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, उसका नॉट कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर 1, 1 एंड 0, 1 एंड 0 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 1, 1 एंड 0 कितना हो जाएगा 0 सॉरी, और उसका हो जाएगा नॉट 1, 1 एंड 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, तो उसका हो जाएगा 0। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा नेक्स्ट वन चलते हैं जल्दी से, 9 गेट के बाद 5th वन आता है अपने पास नॉर गेट। नॉर गेट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट एंड एज वेल एज ऑफ योर नॉट गेट, यानी ये हो जाएगा एरो मार्क का सिंबल विथ योर नॉट, ये हो जाएगा एक आउटपुट वाई एंड वी आर हैविंग टू इनपुट्स ए एंड एज वेल एज ऑफ योर बी, दिस वन इज योर नॉर गेट। ओके, सो नॉर गेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a प्लस ऑफ योर b बार, ठीक है। एक्चुअली होता कैसा है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, एक्चुअल जो हो रहा है बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू योर नॉर गेट एंड देयर विल बी अ नॉट गेट फॉर दिस वन लाइक दिस, देयर आर टू इनपुट्स इन दिस वन, इनपुट ए एंड दिस इज योर इनपुट बी, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू योर a प्लस बी एंड y डबल डैश विल बी इक्वल टू योर a प्लस बी नॉट। क्लियर है? चलो NAND gate and NOR gate are called universal gates. Are called what beta? Universal gate, because all the gates can be made out of them. That is the reason they are also called as what? Universal gates. NAND gate and NOR gate are called as what beta? Universal gate. Sure. Next one is exclusive OR gate. So लिखते हैं XOR. Exclusive OR gate. That is nothing but XOR. ये क्या होता है, जो एरो मार्क का सिंबल होता है ना बेटा, उसको हम लोग सिर्फ एक डबल एरो लगा देते हैं सामने यहाँ पर इस तरह से, and this will be your input for me. So there will be one input right now here A and there is another input right now for me, this one is B, और ये हो गया इसका आउटपुट, this will be equal to Y. क्लियर है? Exclusive OR gate, that means it is double time, so Y is equals to your A B bar plus A bar into your B. इसका मतलब क्या है, one we are taking A then B bar plus again A bar into your B. Is that clear? इसका लॉजिक गेट्स लिख लो, कैसे लिखते हैं बेसिकली, ट्रूथ टेबल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज योर वाई। If A is 0, B is 0, so this is also a 0. This is 0, this is 1, so this is 1, this is 1, this is 0, this is 1, this is 1, this is 1, this will become for me 0. टू टेबल लिख के करना पड़ता है बेसिकली, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, सो वेरी इजी टू डू दिस वन। सो ये हो जाएगा इसका कंडीशन। क्लियर है? दिस वन इज नोन एज ऑफ योर एक्सक्लूसिव OR गेट, 0 1 1 0, 0 1 1 0। उसी तरह से एक्सक्लूसिव OR गेट,
एक्सक्लूसिव, अभी तो ऑर गेट ही करें ना, एक्सक्लूसिवली नॉर गेट कर लेते हैं बेसिकली, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिवली नॉर गेट मतलब देखो ये ट्रायंगुलर शेप का जो था बेसिकल कंडीशन राइट नो, उसके लिए हम लोग नॉट लगा देते हैं, एक्सक्लूसिवली नॉर, नॉर गेट यहाँ पर आया ना, देखो यहाँ पर हम लोग ने लिखा ना, हम लोग बेसिकली एक्सक्लूसिवली जो नॉर गेट आया था ना उसके लिए हम लोग तो डबल मार्क डाल देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। So this will be equal to this one, and this one is an arrow mark. This will be equal to not. This is an out. So इसका एक डबल सिंबल डाल देते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या बेटा, मतलब ये और ये बार लेना है, बी और बी बार लेना, ज्यादा कुछ भी नहीं। So this is your input, that is nothing but equal to your A, and this is your input, that is nothing but equal to your B. अब इसका आउटपुट कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। इसका आउटपुट will be equal to y is equals to A B, ए बी प्लस ये हो जाएगा ए बार डॉट योर बी बार। क्लियर है? इसका अगर ट्रू टेबल ले लो मैं बेसिकली, सो दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी एंड दिस वन इज योर वाई। सेम इसे पहले सर का ही, एवरीथिंग इज फर्स्ट 0 and 0, so this will be equal to 1 and this will be equal to your how much for me बेटा, 0 and as well as of your 1, तो ये हो जाएगा 0, 1 and 0, this will be 0, 1 and 1, this will be equal to your 1. Clear? So these are the gates you need to remember and practice it with your examination hall. इससे ज्यादा हटके अपने को gates का questions आते नहीं है basically, बस थोड़े थोड़ा practice कर लो, आराम से निकल जाते हैं पास questions. Is that clear? चलो एक questions करते हैं इस पे थोड़ा बहुत, so we'll get an idea how do the questions will be framed on this one basically. Yes. You get there on the hook. This one is nothing but equal to your this one. So समझ के देना आंसर, नॉर गेट इसका एक इनपुट है, इसका एक इनपुट है, this one is B and this one is A, this is not, and this one has been connected with the two double bars like this to this given condition, and this one is also one gate right now like this. This is your NOT, and this one is your NOR gate, and this is your output, that is nothing but Y. This is A, B. Okay, now tell me what type of a gate kit will be. So the given electrical network is equivalent to what? I'll give the options for this one. First option is nothing but equal to your OR gate. Second option is equals to your NOR gate. Third option is nothing but equal to your NOT gate. And fourth option is nothing but equal to your AND gate. चलो करोगे कैसे देखो जल्दी से. A and B. A and as well as of your B. तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा देखो बेटा. This one is something like what gate? Arrow mark and NOT. Arrow mark and NOT. So y will be equal to how much बेटा? A plus B bar. तो यहाँ पर होना चाहिए कितना था अपने को? So इसका ये आउटपुट यहाँ पर जो आएगा, this should be have been equal to your A plus B bar. Is that clear? Is that clear? Now these two inputs are same, so this is a NOT. So इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए था कितना बेटा? Y is equals to A plus B double bar. फिर इसका यहाँ पर नॉट होना चाहिए था, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? दिस y विल बी इक्वल टू हाउ मच? कैन एनीवन टेल मी? दिस y विल बी इक्वल टू योर a प्लस b बार. इफ इट इज योर a प्लस b बार क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? a प्लस b बार, देखो a प्लस ऑफ योर b बार क्या हो जाएगा? a प्लस ऑफ योर b बार. विच गेट इट इज? नॉर गेट. सो आंसर आ जाएगा इसका नॉर गेट. सेकेंड ऑप्शन. क्लियर है? इज इट क्लियर? Is it clear? चलो next question. Please mute yourself बेटा. Next one देखो बेटा. और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ basically. Find out the value of your. Find out the value of your y. बस simple question है. This gate is something like this. और इसका एक output लग रहा है यहाँ पर. And there are two inputs for this one. So this is your input A and this is your input B. ठीक है?
Sure. And there is one more gate here right now like this same, and in दोनों का output are being connected to this one like this D shape, and this will be equal to your y. And iska jo B hai, this one is connected to your NOT gate like this. This is 0 and this is a B. And there is one more gate which has been connected, that will be equal to your C. ठीक है ना? So if it is B, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना बेटा B bar, and यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास C. Clear है? Now tell me what will be the answer for this one? Find out the value of your y. Option नहीं दे रहा मैं, आप लोग बताओ जल्दी जल्दी से क्या होना चाहिए. A and B मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? So this will be equal to how much for me? A plus B. Clear? This will be your A plus B. And here it is B bar and this is C. So this will be equal to how much beta? C plus of your B bar or B bar plus C. कैसे भी लिख सकते हो basically. तो आउटपुट क्या बन जाएगा? तो Y will be equal to your A plus B and this will be equal to your dot C plus of your B bar. So this will be the answer. आ गया सभी को? Is that clear? Sure. Next question. To get output 1 for the following circuit, the correct choice for input is, first one is A is 0, B is 1, C is 0. Second one is very simple question. Second one is A is your 1, B is your 0, C is also your 0. Third one is A is your 1, B is your 1, C is your 0. And fourth one is A is your 1, B is your 1, and C is your 1. This is a given diagram for us. So diagram is given like this. Like this. इनका इनपुट ये है और ये हो गया इसका इनपुट भी. दिस इज गिवन डायग्राम. कैन एनीवन टेल मी बेटा? टू गेट आउटपुट 1 यानी y की वैल्यू अपने पास 1 आना चाहिए. तो ये एंड b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? ये एंड b की वैल्यू मिला के जो आउटपुट यहाँ पर आ रहा है बेसिकली, सॉरी ठीक है, ए एंड बी मिला के जो आउटपुट यहाँ पर आ रहा है y विल बी इक्वल टू 1. c की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1. अगर y की वैल्यू 1 होना है मतलब ये वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1, b वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू योर 1. क्लियर है? So answer must be equal to what beta? A is 1, B is 1, and C must be equal to 1. What gate is this one? Can anyone tell me beta? If it is an arrow mark shape, what type of a gate it will be beta? OR gate, isn't it? And this will be what type of a gate? AND gate. AND gate में 1 कब आएगा? जब दोनों इनपुट भी 1 रहेंगे तो ही अपने को आउटपुट भी कितना हो जाएगा? 1 आ जाए. क्लियर है सभी को? Is that clear? Is that clear? Sure. One more question. What is the output value of, what is the output y in the following circuit? The following circuit when all the three inputs A, B, C, are first 0 and then 1. Or first 0 and then 1.
ठीक है, diagram is given for me, this one. Options are for me. First option is 1, 0. Second option is 1, 1. Third option is 0, 1. And fourth option is 0, 0. So the gate is given something like this. This is a D-shaped structures. Okay. And iska yahan par ek output. And here also this one is your D shape of your structure. And this is your output with your NOT. And this one is your output Y. इसका एक इनपुट दे रखा है, दिस वन इज नथिंग बट ए, एंड इसका इनपुट दे रखा है, दिस वन इज नथिंग बट इक्वल टू योर बी. सो दिस इज योर पी एंड दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर क्यू. इसको एक डायरेक्ट इनपुट लग रहा है यहाँ पर बेसिकली. सो ये हो जाएगा मेरे पास सी. So what is the output Y in the following circuit when all the three inputs A, B and C are first 0 and then 1. ठीक है, चलो पहले क्या बोलो, फर्स्ट 0 है, उसके बाद अपने को 1 आ रहा है, उसके बाद अपने पास 1 आ रहा है, मतलब A value must be equal to 1, B value must be equal to 1, then only this output here will be equal to 1. C value should also be equal to your 1. And what type of a gate it is, beta? Can anyone tell me? D shape of your structure it is right now. D shape of your structure with a NOT. D shape of your structure with your NOT. That means this will be equal to Y A dot B NOT. होता है ना बेटा? Isn't it? So if both the inputs are nothing but equal to your 1, then output will be equal to your 0. That is not of that one. That means क्या होना चाहिए? What must be the answer for this one, beta? Can anyone tell me? फर्स्ट 0 था, उसके बाद 1, तो 0 के लिए कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 1 के लिए कितना आ जाएगा 0. फर्स्ट 0 है ना बेटा, तो इट इज आउटपुट इज इक्वल्स टू फॉर 0 y is equals to a dot b bar will become for me 1. Then for 1 the value of y will become how much for me beta? A bar b, a dot b bar will be equal to 0. So 1, 0 must be the answer for this one. Is it clear? Is it clear? ठीक है बेटा. क्लियर है बेटा? So this was some of the basics of your logic gates, which you should always keep in mind while doing the numericals related to your logic gates manipulation. Clear है बेटा? Is it clear for everyone? चलो ग्रैंड टेस्ट पेपर 2 कर लें बेटा. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सभी को? क्लियर है? एक बार देख लो जल्दी से फिर से एक बार. In logic gates, high voltage is represented by 1 and low voltage is represented by your 0. Boolean algebra में ये अगर a बार होगा, मतलब अगर a value 0 है तो a बार हो जाएगा 1. If a value is given as of your 1 and a bar will become how much for me your 0. Like b will giving rise to your b bar. If it is a double bar is nothing but equal to your a, and b double bar will be equal to your b. And rule this one देखिए बेटा, a dot a bar will always be equal to 0 and b bar dot b dot b bar will always be equal to 0. Next one, a dot a will be equal to a and b dot and b will be equal to b. इसको हम लोग को दिमाग में याद रखना है, थोड़ा याद रखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, that will be very easy. And how to break the bar and how to change the sign, ये अपने को याद रखना है.
जब भी आप ब्रेक कर रहे हो बाउंड बार को, तो अगर डॉट है तो प्लस बन जाएगा, अगर प्लस है तो डॉट बन जाएगा। इसको हम लोग याद रखना है बेसिकली। तो एक एग्जांपल लिया मैंने, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 1। हियर इट इज a प्लस b बार डॉट a b बार प्लस a b होल बार। तो आई एम ब्रेकिंग फर्स्ट द बार अबव। जैसे मैंने ये बार को ब्रेक कर दिया यहाँ पर, द मोमेंट आई एम ब्रेकिंग दिस बार राइट नाउ, दिस डॉट इज बिकमिंग फॉर मी प्लस, then this will become for me a plus b bar total bar, a b bar plus a b total bar. Then I can write this one as of your a bar. If I'm breaking again here this one, so this will become for me a bar, and this plus will become for me dot. And here it is a b double bar, this plus will become for me dot, and this will become for me a b bar. Then b double bar will be equal to b, and ab double bar will be equal to ab, and this is dot, so it is ab. A dot b bar, this one is nothing but dot. A dot a bar will be equal to 0, b dot b bar will also will be equal to 0. So the answer will be again a bar dot b bar. ठीक है ना? उसी तरह से और एक एग्जांपल दिया मैंने, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा। The next one is logic gate. Logic gate में first one is nothing but of your NOT gate. NOT gate मतलब if input is positive, output will be the negative. If input is negative, the output will be your positive. So इसका algebran Boolean कितना हो जाएगा? Y is equals to your A bar. Y is equals to your A bar part affiliation. Clear as every go? Is it clear for everyone? चलो, नॉट गेट के बाद मैंने क्या बोला था बता, एंड गेट। ये एंड गेट कहीं मिट गया, सो दिस वन इज योर एंड गेट। चलो आ गया वापस। चलो एंड गेट, एंड गेट के लिए अलजेब्रा क्या हो जाएगा, रूल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a डॉट b। इसको हम लोग याद रखना है बेसिकली, एंड जस्ट टेक इट एज ऑफ योर राइट नाउ डॉट। डॉट मींस हाउ डू राइट, y इज इक्वल्स टू योर a एंड b। We are reading this one as what beta, y is equals to your a and b, y is equals to a and b। ये ट्रूथ टेबल एक बार देख लो आप लोग। उसी तरह से और गेट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड विद एन एरो मार्क सिंबल, सो y is equals to a and this one is read as of your r। इसका हम लोग को ये सिंबल याद रखना है। अगेन ट्रूथ टेबल ऑफ दैट वन, देन टेक एंड गेट, उसके बाद नॉर गेट, देन उसके बाद एक्सक्लूसिवली और गेट। एक्सक्लूसिवली और गेट में कुछ भी नहीं होता बेटा, और गेट के लिए ऊपर एक डबल मार्क डाल दो और इसका अलजेब्रन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल्स टू योर a b बार प्लस a बार b। एक तो पहले ये ले रहे हैं, उसके बाद डॉट और डबल डाल दिया तो उसका हम लोग a बार ले रहे हैं, उसके बाद b और उसका b बार। इसी तरह ज्यादा कुछ भी सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दिस। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन पेपर देखो बेटा जल्दी से। फर्स्ट वन किया है बेटा किसी ने? Has anyone done the first question? 1 to 9, 1 to 9 किया किसी ने? फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट पेपर मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था। सेकंड ग्रैंड टेस्ट आप लोगों को करने के लिए बोला था, लेकिन एक जने भी की नहीं भेजे। I don't know whether you are busy with your own schedules or something else, but still these papers are really important and really confident building question papers beta. All the questions are simple. Only thing is आपका remembering collection आप लोग को याद दिलाने का है कि how far you are good with your remembering concept. चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। If the momentum, area and time t are taken to be the fundamental quantities, then energy has the dimensional formula is equals to how much? देखो बेटा, momentum is represented by p, area is represented by a, and time is represented by t. We need the dimensions of energy. So energy is directly proportional to your momentum to the power of your a, उसके बाद area to the power of your b, then time to the power of your c। ठीक है ना? तो एनर्जी का डायमेंशन लिखो बेटा, किसी को याद है एनर्जी का डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml square t power -2। Okay, so that is equals to some constant k. Momentum is m into v. M into v मतलब m into this will be equal to your L t power of -1 to the power of your a। उसके बाद एरिया, एरिया will be equal to how much बेटा? L square, that is L square to the power of your b। Time is nothing but t, same as t to the power of your c। बस हो गई बात।
isn't it? So all the powers of your m एक जगह लिखो and compare the powers, that is will be getting the answer. यहाँ पर m का पावर कितना है बेटा 1, l का पावर कितना है 1, t का पावर है -2, that is equals to k. All the m I am taking it one side, so it is m to the power of a. This is your l to the power of your a plus of your 2b. Then next one is nothing but of your t to the power of minus a plus of your c. So compare the powers and get the answer. That's it. So I'm leaving that one for you. You can check it out. A value must be equal to your 1. And the next one is your a plus of your 2b must be equal to 1. And minus of your a plus c must be equal to -2. ठीक है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो इसमें से मैं यहाँ पर b की वैल्यू निकाल सकता हूँ. सो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 प्लस ऑफ योर 2b इज इक्वल्स टू 1. तो 2b अगर लेके चले गया तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2. सो b की वैल्यू आ गई मेरे पास. a की वैल्यू कितनी है बेटा -1 प्लस c इज इक्वल्स टू -2. सो फ्रॉम दिस वन आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू -1. तो c की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 1/2 and a की वैल्यू है 1. So what is an answer for this one? P to the power of your, so energy will be proportional to your P to the power of your A. A is nothing but 1. The next one is area, that is nothing but your A. This one is A to the power of your 1/2. The next one is T to the power of C. C is nothing but -1. तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा? P to the power of 1, A to the power of 1/2, T to the power of -1. यानी D option will be the answer for this. Okay. So which of the following time measuring device is most precise? A wall clock, a stopwatch, a digital watch, and atomic clock. Obviously, atomic clock is the most accurate, which is being based on the characteristics of frequency of radiations emitted by the atoms, isn't it? So it's the basic things. You can get it out from NCERT. Atomic clock is the basic answer for that one. Next one, the speed of the ripples on the surface of the water depends on the surface tension sigma, so density rho, and wavelength lambda. The square of the speed v square is proportional to how much? Sigma is what beta? Surface tension. Surface tension is equals to force per your unit length. Density is equals to mass by volume. Wavelength is nothing but equal to length. Then he's asking the dimensions of your v square part of relation. So we need to check with the dimensions of this one beta. That's it. So second one, third one I'm doing right now here. First one is sigma. Sigma का dimension हो जाएगा force by your area. Sigma is nothing but of your force per your unit length. Force is ml t power -2 divided by l. L will get cancelled, so it is ml t power -2. The next one is nothing but density. Density is equals to mass by volume, so it will be ml t power -3. Then wavelength will be equal to lambda. That's it. See the first option, sigma divided by rho into y will be equal to how much? Sigma is ml t power -2 divided by rho value will be equal to ml power -3 into your l. So m will get cancelled. So from this one I'll be getting how much beta? L power per gaya. So this will become for me L power -2, v power -1 will become for me plus. So this will become for me how much beta? This is L and this is also L only, na? This is your ml t power. This is ll gets cancelled and t होगा ना बेटा. Sorry, I did a mistake right now here. So यहाँ पर l चले जाएगा. This is t power -2. So ये हो जाएगा m t power -2 divided by this one is nothing but of your m l power -3 and this one is nothing but l. So L power -3 मतलब ये m और m यहाँ पर चले गया. So this will become for me L power of your -2 and ऊपर चले जाएगा तो that will become for me +2. तो ये हो जाएगा L square t power -2. Okay, L power -2 मतलब कितना? L t power -1. L t power -1 is velocity. So L t power -1 into L t power -1. तो ये कितना बन जाएगा? L square t power -2 यानी this will be equal to v square. तो फर्स्ट ऑप्शन ही डायरेक्टली दे दिया, तो बाकी के ऑप्शंस अपने को करने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट वन, a cyclist starts from the rest O on a circular path of radius 1 kilometer, reaches the point of your P of the path, then cycles along the circumference and returns to the center of your OQ as shown in the figure. Okay. In the round trip, if the round trip is taking 10 minutes, what is the average velocity of the cyclist? कोई बताएगा आंसर इसका? Question number 4.
A cyclist starts from the center O of the circular park of radius of your 1 kilometer, reaches the point of your P of the park, then cycles along the circumference. That means he's starting from O and goes to the P. From P, it will go to your Q along the circumference and returns to the center along your QO. So displacement will be 0. So in the round trip, the displacement will be 0. So what will be the average velocity is asking. So what do you mean by average velocity? Beta? Average velocity is net displacement by your net total time. So obviously it will be 0. करने की ज़रूरत ही नहीं है. In the question number 4 above, what is the average speed? Yes, you can do this one, beta. This is first question. Average speed मतलब पहले total distance निकालना है. So distance will be equal to how much, beta, from the given figure? O to P plus of your arc, that is nothing but of your P to Q, then again your Q to O. Okay, so O to P is how much for me? 1 kilometer plus this one is nothing but equal to PQ is nothing but arc, that is nothing but 2 pi into R. R is nothing but 1 divided by 4, isn't it? So it is 1 by 4th of the circle now, so it is 2 pi by 4. This one is also kilometer plus of your 1. So it is 2 pi by your 4. So 2 1s are 2 2s are, it will become for me pi by 2. So pi by 2 is nothing but 180 divided by 2, 90. Okay, 180 divided by 3.14. 3.14 divided by your 2. So this is 1 plus this one is 2 1s are, this is 2 2s are. So it is 3.14 divided by 2 plus of your 1. So this will be approximately 3.75 kilometers. Then average speed will run. Average speed will be equal to 3.57 divided by how much time it will be taking right now, beta. So 10 minutes. It takes 10 minutes. So in 10 minutes means answer is given in 1 hour. So try to complete that one. So 1 by 6th hour हो जाएगा 1 minute बाद. So this will be 1 by 6th hour. इसको calculate कर लो, that will give me the answer. चलो next one. The angle between A bar is equals to I cap plus J cap and B bar is equals to I cap minus B cap will be equal to how much? कोई बोलेगा what will be the angle between them? इसको आया आंसर ये. ये आंसर आया बेटा किसी को? चलो जल्दी से बोलो. 6th one. The angle between A bar is equals to I cap plus J cap and B bar is equals to I cap minus of your J cap. तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. A bar dot your B bar will be equal to your how much? जल्दी से बताओ. A bar dot your B bar. So this will be equal to I cap plus of your J cap. Oh, sorry. Dot, this will be equal to I cap minus of your J cap. So this will be equal to your I cap dot your I cap minus this is I cap dot your J cap, then plus this one is J cap dot your I cap minus J cap dot your J cap. तो कितना हो जाएगा बेटा? I dot into I is nothing but 1 minus ये हो जाएगा 0 plus again 0 then minus of 1. So this will be equal to 0. अगर A bar dot B bar 0 हो गया then at what angle it will be 0 बेटा? Because we know the formula A bar dot B bar is equals to mod A mod B into your cos theta. So अगर theta 90 degrees डाल दे तो mod A into mod B into cos 90, cos 90 will be equal to 0. Yani theta must be equal to how much beta? 90 degrees. So theta will be equal to 90 degrees. Clear? 7th one. A grasshopper finds that it can jump a maximum horizontal distance of 0.8 meter. With what speed can it travel along the road if it spends a negligible time on the ground? आया किसी को ये question? A grasshopper finds that it can jump a maximum horizontal distance of चलो बताओ जल्दी से. A grasshopper finds that it can jump a maximum horizontal distance. Maximum horizontal distance मतलब क्या बेटा? Range ही ना. तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ जल्दी से. रेंज R is equals to your V naught square divided by your G.
रेंज की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 0.8 मीटर. सो दिस इज योर 0.8 is equals to V naught square divided by G. G value is nothing but 10. So it is 0.8 into your 10 is equals to V naught square. So this 0 and this will get cancelled. So V naught square will be equal to your 8. So V naught will be equal to how much better? This will become for me 2 root 2 velocity. Then what is asking the problem? With what speed it can travel along the road if it spends a negligible time on the ground? So velocity along the road will be equal to how much better? Horizontal velocity only. So it will be V naught into your cos theta. So V naught is equals to 2 into root 2. Maximum range is at an angle of your 45 degrees. So that will be equal to 2 into root 2 into 1 by root 2. This will get cancelled. So that will be equal to 2 meter per second. So 2 meters must be the answer. Very simple application. 18th one. A cricket ball is hit for a 6, leaving the bat at an angle of 45 degrees to the horizontal with kinetic energy K. At the topmost, the kinetic energy of the ball will be equal to how much? You know that in a projectile at highest point, there will be only horizontal projectile, vertical projectile will become for me 0. अगर 8th one के लिए मैं कर लूँ तो kinetic energy will be equal to your half into m into velocity at highest position will be v into your cos of your theta whole square. Theta is 45 degrees, so this will be equal to half into m into v square into cos square. Theta value is 45 degrees. Cos 45 will be equal to 1 by root 2. Okay, so this will become for me half of your m into v square into this will become for me 1 by 2. So it is 1 by 4 into your m into your v square. Or else I can write this one as of your k by 2. Okay, na? In terms of your kinetic energy. So that will become for me k by 2. Clear? Sure. With what minimum acceleration can a fireman slides down a rope whose braking strength is 2 by 5th of its weight? कोई बताएगा इसका आंसर? कोई बताएगा इसका आंसर? जल्दी. 0.6. 0.6. Very good. Because when this is your string right now, and this is says, for example, something with what minimum acceleration can a fireman slides down. So this fellow is coming down. So tension in the string is nothing but in the upward direction. So acceleration of this one is in the downward direction. So T will be equal to your m into your g minus of your e. Tension is given how much for me beta? Given in the problem for me, T is equals to 2 by 5 times of its weight. That is nothing but mg. So if I substitute that value here right now, so this will become for me 2 by 5 times of your mg is equals to your em into your g minus of your a. So this will be equal to your mg minus of your m into your a. So acceleration will become how much for me beta? 3 by 5 times of your g. G value you can take it as 10, so it is your 30 divided by 5. So that is approximately 3.5 G में आंसर दे रखा है ना, तो try to take an answer in terms of G only. So 3 by 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.6 आएगा. So this is 0.6 times of which. ठीक है? सर स्क्रीन ब्लर आ रही. अभी भी ऐसी आ रही? यस सर. पता नहीं वर्ड नोट काम नहीं कर रहा मेरा. चलो के लिए इसी में एडजस्ट हो जाओ, देखते हैं फिर कल.
Question number 10 देखो बेटा. A man squatting on the ground gets straight up and stands. The force of the reaction of the ground on the man during the process is very good question. A man is skating manwal. A man is skating on the ground, gets straight up. तो आप generally skating करते समय generally झुकते हैं हम लोग. So when he stands up, the force of reaction of the ground on the man during the process will be equal to how much? Now, when the man is been getting up better, the man exerts a variable force on the ground during getting up. So he sets his body in the motion. So this force is in addition to his weight. Once the man has been standing, the variable force will become 110% zero for me, isn't it? Because the net force will be balancing. So first it will be greater than mg, then later on it will become equal to your mg. So it will become for me zero, because when initially skating, what is happening is the man is exerting the variable force on the ground. Because of that variable force, he is able to skate, isn't it? So the moment he has been standing up, so according to his weight, he is exerting some more weight on this body. So the man generally exerts a variable force on the ground. During getting up to his body part, this variable force is in addition to the weight. So once the man has been standing the position, again that variable force will become for me zero. That means it should be greater than mg. Then when he's standing, it should become equal to your zero. That is nothing but of your mg. So D must be the answer for that. Very good question. Next one, 11th one is also a very good question. A raindrops falling from a height h above the ground attains a near terminal velocity when it has been fallen through a height of 3/4 of your height. Which of the diagram shows in the figure the correct shows the change in kinetic energy and potential energy of the drop during its fall up to the ground? A raindrops is falling from a height h, so it has potential energy above the ground, attains a nearly terminal velocity, that means constant velocity, when it has been fallen through a height of 3/4 times of height. Which of the diagrams shows in the figure correctly shows the change in kinetic energy and potential energy of the drop during its fall up to the ground? Okay. कौन सा होगा बेटा? B sir. कौन सा? B. B. Yeah. B is the answer. Why and how? At maximum height, the body possesses what energy, beta? Potential energy, and kinetic energy will become zero. That's only a thing we need to take. So in this one, for the first option, it is not possible because potential energy is taken zero. So blindly zero ho jayega. Third option is also not possible. And fourth option is also not possible. Only option which you can able to see where the body is possessing the maximum potential energy is ऑप्शन नंबर बी. ब्लाइंडली लिख सकते हो, उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. खाली क्वेश्चन देखिए तो भयंकर है, ऑप्शन भी देखने के लिए भयंकर है, लेकिन ऑप्शंस इतने ज्यादा आसान से दिया हुआ है क्योंकि he can easily eliminate, because when raindrop is being falling from a certain height, you should always possess certain maximum potential energy, और इसकी kinetic energy zero होना चाहिए. So only in the first option there is a maximum potential energy. Okay, is that clear? फर्स्ट वन में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो दे रखा है, पॉसिबल नहीं है. थर्ड ऑप्शन में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो देखा, पॉसिबल नहीं है. फोर्थ ऑप्शन में भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो दे रखा है, ब्लाइंडली पॉसिबल नहीं है. सो ओनली ऑप्शन विद द सेकंड आई कैन राइट इट इज नथिंग बट ऑफ योर सेकंड ऑप्शन. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, 12th वन देखो. एन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. At some instant of a time, a viscous liquid of mass m is big. पहले काम करता हूँ बेटा, मैं सेकेंड ईयर के जो हम लोग टॉपिक्स खत्म कर लिए ना, वो टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर लेते हैं. लेट अस ट्राई टू सी वेदर वी कैन डू द 10 क्वेश्चंस और नॉट, देन विल ट्राई टू गो फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस. एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार जल्दी से. चलो 47 का आंसर बताओ कोई जल्दी से. Can anyone tell me what is the answer for 47th question? Ionization potential of the hydrogen atom is 13.6 electron volt. Hydrogen atoms in the ground states are excited by a monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt.
According to the Bohr's theory, the spectral lines emitted by the hydrogen will be equal to your how much? 3. आया? Very good. Spectral lines निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? n is equals to your n into your n minus 1 divided by 2. है कि नहीं? n की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? Energy of atom in the excited state is how much for me? Minus 13.6. तो मैंने इसको आपको याद रखने के लिए बोला था. It is minus of 13.6 और plus 12.1 electron volt. So this will become how much for me beta? Minus of 1.5 electron. 0.5. Minus of 1.1 electron volt is been applicable for your 3. So n is equals to 3 डाल दो यहाँ पर. So it is 3 into 3 minus 1 divided by 2. So this will be equal to 3 2 by 2. This 2 will get cancelled. So that will be equal to 3. Very good. Next one, 48. The de Broglie waves present in the fifth orbit is, the de Broglie wavelength present in the fifth orbit will be equal to how much? बोलो जल्दी से. वन ऑर्बिट मतलब कितना बेटा? दिस इज वन ऑर्बिट. वन ऑर्बिट के लिए वेवलेंथ विल बी इक्वल टू मच 2 पाई आर. फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 5 लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 2 पाई आर. तो यहां से यहां तक 1, then this one is 2, this one is 3, this one is 4 and this one is 5. Fourth option. Clear है? चलो 49. Proton and an alpha particle are accelerated through the same potential difference. The ratio of de Broglie wavelength of the proton to the de Broglie wavelength of the alpha particle will be equal to how much? So wavelength का formula lambda is equals to your h by your under root of your 2m into charge into potential, isn't it? So in terms of mass or in terms of charge अगर मुझे लिखना है basically तो क्या हो जाएगा? So wavelength will be equal to how much बेटा? Wavelength of the proton divided by wavelength of your alpha particle will be equal to under root of your mass of alpha particle divided by mass of your proton into charge of alpha particle divided by charge of proton. So जल्दी से करके बताओ. This is under root of mass of alpha particle is 4 times the mass of proton divided by mass of proton into charge of alpha particle is 2 times the charge of your electron. So ये चलेगा. Mass of protons will get cancelled. So that will be equal to how much? Root of your 8. Root 8 मतलब कितना? 2 root 2 divided by 1. So it will be equal to how much? Second option. Clear? चलो 50th का आंसर बताओ जल्दी से. The symbolic representation of the 4 logic gates are shown. Pick out which one are the for AND gate, NAND gate and NOT gate. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बोल देना चाहिए आंसर आपको. फर्स्ट वन क्या रिप्रेजेंट करेगा? Pick out which for your AND gate, which is for NAND gate, NOT gate. तो AND gate कौन से रिप्रेजेंट करेगा? कौन सा ऑप्शन देगा? आंसर बताओ जल्दी से. 2. Second. Yeah, ये हो जाएगा 2. This one is nothing but what? First one is representing what beta? Or. First one is representing R. So this one is representing R gate. This one? And. AND gate. This one? Not. This one? And. NAND gate. तो पूछा क्या? Which is NAND gate. First one is nothing but AND gate. AND gate is for the 2. Very good. 2 है. तो ये और ये तो हो ही नहीं. सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन में देखना है. उसके बाद NAND gate. NAND gate is nothing but 4. तो यहीं पर हो गया. So first option will be the answer. Clear है? Yeah. Yes, sir. चलो. चलो ये वाला बताओ जल्दी से. 46. Energy required for the electrons excitation. Energy required for the electrons excitation in your lithium plus from the first to the third Bohr orbit is how much? आया किसी को? Energy required for the electron excitation in the lithium plus from the first to the third Bohr orbit will be equal to your how much? 46. Energy का formula delta E is equals to 13.6 into your Z square into your 1 by, this is nothing but first orbit 1 square, next one is nothing but third orbit 3 square. Electron volt means the unit. P हो जाएगा मेरे पास 13.6 hydrogen like atom है first one. So this will be equal to your 1. तो लिथियम है. लिथियम प्लस मतलब कितना हो जाएगा बेटा? एटॉमिक नंबर 3. So this will be 3 whole square.
into your, this one will be equal to how much beta? 1 square is 1 minus 1 by 9. तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से? 13.6 into 3 square is nothing but equal to how much for me? 9. 1 minus 1 by 9 is how much beta? 8 by 9. 8 by 9 चले गया, तो ये कितना आया? 13.6 into your 8. कितना आ रहा? लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 108.8. 108.8. वेरी गुड. तो डी ऑप्शन विल बी द आंसर. क्लियर है सभी को? चलो हम लोग रे ऑप्टिक्स भी करे थे. इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ योर कॉनकेव मिरर, ए ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ u एंड v. द ग्राफ विल लुक लाइक. चलो मिरर के लिए फॉर्मूला बताओ. 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. Okay. Yes. So what is asking an experiment to find the focal length of the concave mirror, will be using a graph is drawn between magnitudes of your u and as well as of your v. बताओ क्या हो जाएगा आंसर? u और v के बीच में ग्राफ क्या हो जाएगा? C sir. C है. क्यों? One by f is what beta? Focal length. So f will be equal to how much for me? V into u by v plus u. It will be rectangular hyperbola. That will be in the form of y is equals to 1 by x. So 1 by x, rectangular hyperbola. So it will be your rectangular hyperbola. Third option will be the answer. चलो very good. Next one वाला बताओ जल्दी से. किसी ने किया है? Two slits is at a distance of 1 mm are illuminated by a light of wavelength 6.5 into 10 to the power of minus 7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed at a distance of 1 meter. The distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe will be equal to your how much? 44. YDSC का problem है, direct formula based है. Two slits are at a distance of 1 mm. यानी this is your YDSC. So इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है कैपिटल डी. कैपिटल डी is given for me how much? 1 mm. Is illuminated by light of wavelength lambda is equals to 6.5 into 10 to the power of minus 7 meter. The interference fringes are being observed on a screen placed at a distance of 1 meter part of relation. That means what beta? Small d is given how much for me? Small d is interference fringes are being observed on a screen placed at a distance of, two slits are at a distance, sorry, this is small d beta. Small d is equals to 1 mm and capital D is being kept at of your 1 meter. The distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe will be equal to how much? Okay. Fifth bright fringe means x5 will be equal to your 5 into lambda into capital D divided by small d. And third bright dark fringe means x3 will be equal to your 2n minus 1 into your lambda into capital D divided by your 2d. Clear hai? Is it clear? Yes sir. Now उसने क्या बोला? The distance between the third dark fringe and your fifth bright fringe. ये तो fifth हो गया. और third dark fringe आना बोले तो क्या करना है मेरे पास बोलो? Third dark fringe मतलब n is equals to 3. So this will be equal to 2. This will be equal to 2 into 3 minus 1 into lambda into capital D divided by 2d. 2 3 is 6, 6 minus 1, that is 5. So this is your 5 into lambda into capital D divided by 2d. Isn't it? Now take the subtraction of both of them. तो कितना आ जाएगा देखो. This will become for me x5 minus of your x3. So that will be equal to your 5 capital D lambda small d minus of your, this one is 5 times of your lambda into capital D divided by 2d. तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 minus 1 by 2. So it will be 5 lambda into capital D by your 2d. So everything's are been given. Just substitute, will get the answer for that. Okay. Sure. That was the one direct question. We can answer it. The next one is nothing but equal to 43. People wearing the spectacles when working with a microscope should keep on wearing the spectacles. Should take off their spectacles. May keep on wearing or take off their spectacles. It make no difference. Cannot use the microscope at all. कोई बोलेगा आंसर इसका?
People wearing the spectacles when working with a microscope should obviously should keep the wearing his spectacles, otherwise he can't see the exact working. So ये must be the answer. Very simple question. चलो 42 हम लोग कर लेते हैं बाद में. 41 का आंसर कोई बात बता सकता है क्या? देखो बेटा, what is the answer for the 41? Fundamental particle in electromagnetic wave is electron, proton, alpha particle, photon. क्या आंसर होगा? Photon. फंडामेंटल पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन. ठीक है, चलो ये तो सिंपल क्वेश्चन ही था. क्वेश्चन नंबर 35. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव मी द आंसर. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द 2 ohm वॉट नहीं होता, दिस शुड बी 2 ohm 2 ohm रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट. बताओ जल्दी से. विदाउट यूजिंग पेन यू कैन टेल मी द आंसर. देखो 10 वोल्ट से करंट जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर जहाँ स्टार्ट हुआ वहां पर ही वापस आएगा. फिर 20 वोल्ट में करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर वापस यहीं पर ही आएगा. तो कुछ भी करंट इसमें नहीं जा रहा. इट शुड बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 0. क्लियर है? चलो, इन द फिगर व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी? आई नीड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी. दैट मींस दिस इज इनएफेक्टिव एंड दिस इज इनएफेक्टिव. Clear है? If that is ineffective, this two will become what combination, beta? Series. So the 10 plus 10, that will become how much for me? 20. This two will be how much? 20. 20 and 20 will be what combination? Parallel. Yes, Parallel. ये 5 हो जाएगा. तो यहाँ पर एक ऊपर रेजिस्टेंस ऐसा आएगा, फिर यहाँ पर नीचे ऐसा आएगा, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा. दिस इज डी एंड दिस इज ये. दिस इज 5, दिस इज 20, दिस इज 20 एंड दिस इज योर 5. दिस विल बिकम फॉर मी 5 प्लस 10 प्लस 5. तो कितना हो गया? 20. सो 20 ohms विल बी द आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन. चलो 32 का आंसर बताओ जल्दी से. सर थोड़ा जूम करिए ना सर स्क्रीन. ठीक है अभी? हाँ सर. 32. व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट? जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कितने क्वेश्चन पूछा? 1 2 3 3 क्वेश्चन आए इसमें. 3 का 1 2 3 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताओ जल्दी से कोई. व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट? बहुत इजी क्वेश्चन है. पहले आर इफेक्टिव निकालो. पहले आर इफेक्टिव निकालो. ये पूरे कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? देयर इज नो डिवीजन ऑफ ए करंट एनीवेयर. यहां से करंट जा रहा है या यहाँ पर सेम करंट, यहाँ पर सेम करंट, यहाँ पर सेम करंट, यहाँ पर सेम करंट. तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है. इसमें I1 मान के चलो, इसमें I2 मान के चलो. तो I1 इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है. तो ये पूरा सीरीज है. सो 2 + 2 + 2 तो कितना हो गया पूरा? 6. तो यहाँ पर आ जाएगा एक 6 ohms. 6 and 2 are in which combination? Parallel. So 6 into 2 divided by 6 plus 2. 6 2s are 12 divided by 8. कितना आया? 3/2. 3/2. If it is your 3/2, I will be equal to how much, beta? I is equals to V by R. V is how much? 3. R is nothing but your 3/2 into 2. 2 gets cancelled. Answer is 2 amperes. So T is the answer. Clear है? Yes sir. चलो. Next one. In the arrangement of the experiment of the meter bridge, if AC corresponding to the null deflection of galvanometer is X, what would be the value if the radius of the wire AB is been doubled? Okay. मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट दे रखा है. मीटर ब्रिज में कंडीशन याद है ना आप लोग को? मीटर ब्रिज का कंडीशन क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ कोई. R1 by your R2, R1 by your R2 will be equal to, अगर ये x है तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 100 minus x. So it is your x divided by your 100 minus of your x. यानी that will be equal to how much बेटा? X is nothing but resistance across your AC divided by this is the resistance across your BC. Okay, when the resistance of the wire AB is doubled, both AC and your BC would decrease better, but the ratio in that one will remain for me same. So meter bridge will remain for me balanced and AC remains with the same. That means it should be same X. पूरा wire AB को double किया ना बेटा? When AB is been doubling, the ratio of AC, the AC and CB may be changing, but ratio will always remain for me the same. So there is no change in that one. So directly X will be the answer.
वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा। उसके बाद तो मॉडर्न फिजिक्स के इतने सारे क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से 2-3 यानी 10-12 क्वेश्चन तो आप आराम से करने वाले लायक क्वेश्चन ही थे बेसिकली उसमें। चलो अभी सर्कुलर मोशन वगैरह का है और ग्रेविटेशन भी डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये कर लेना है। तो बाकी के आप लोग ट्राई कर सकते हो कि मुझे कराना पड़ेगा फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स। 16th वन का आंसर कोई दे सकता है क्या? देखो बेटा जल्दी से 14, 15, 16 14th वन देखो बेटा। A stone is been tied at one end of a 5-meter long string and drilled in a vertical circle. The minimum speed that the top required to just cross the position will be equal to how much? What is the answer for this one, beta? Can anyone tell me faster? In a vertical circle, velocity at highest position कितना होना चाहिए बेटा? Lowest position पे under root of 5gr, highest position पे under root of your g into r. So velocity at highest position will be equal to under root of g into r. So g की वैल्यू हो गई 9.8 और रेडियस कितना देकर रखा है 5 meters. So it will be equal to how much बेटा? Under root of your 9.8 into root 5 कितना आ रहा है देखो? Root 9.8 into 5. Yes, sir. कितना आ रहा? 7 meters. कितना? 14 मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 ले लो। So 7 meter per second. चलो नेक्स्ट पार्ट। Angular momentum of a particle rotating with the central force is constant due to angular momentum का फॉर्मूला क्या है बेटा? Tau is equals to dl by your dt. ओके अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कांस्टेंट है, अगर एल कांस्टेंट है तो टार कितना होना चाहिए? 0, isn't it? So it should be a 0 tar. Next one, the variation of acceleration due to gravity with the distance h above the earth. Distance with respect to height का फॉर्मूला बताओ बेटा। g at your height will be equal to g into 1 minus of 2h divided by r, isn't it? So it's correctly represented by which graph? कौन बता सकता है? जल्दी से बताओ जल्दी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 से लेके r तक कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे फिर ऊपर जाओगे इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। सो सी ऑप्शन विल बी द आंसर। क्लियर है सर? चलो, gravitational potential energy of a body of mass m at the surface of the earth have their usual meaning is given by potential minus energy gmm by r is equal to minus of capital G capital M small m divided by small r. For the small r is equal to capital on the surface, so u is equal to minus of small g capital M small m divided by capital R. What will be the answer? C. c. Okay, and I hope 18th one आप लोग कर सकते हो बेसिकली। चलो नेक्स्ट वन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा जल्दी से। Two charges of equal magnitude and at a distance r exerts a force F on each other. If the charges are been halved and the distance between them is doubled, then the new force acting on them will be equal to how much? Very simple question. कितने जनों का आंसर ये? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बेटा 19th one. Force is directly proportional to q1 q2 and inversely proportional to the square of the distance between them, isn't it? So F1 will be proportional to charges are half, so it is q1 by 2 into your q2 by 2 divided by this one is nothing but equal to how much beta? 2r into your whole square. This will be proportional to how much beta? This will be proportional to your q1 q2 divided by 2 into 2 4, 4 into 4 r square, that will be 16. तो ये हो जाएगा q1 q2 divided by 16 times of r square, यानी f1 will be equal to how much beta? F by your 16, so it should be D.
क्लियर है? 20th वन इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हो बेसिकली, और बाकी के तो हम लोग ने चैप्टर्स किए नहीं है, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लो, नहीं हुआ तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट पार्ट। ठीक है, चलो कल की क्लास में इंशाल्लाह अगर हुआ तो आई विल बी स्टार्टिंग विद योर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बेटा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पहले करूंगा, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स करूंगा। ठीक है, ओके सर, चलो ठीक है बेटा, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।